फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। Okay, so let's derive the drift velocity, that equation of drift velocity. So consider a conductor apply some potential difference by placing one battery. So यहाँ पे battery रख दी. So see, this is positive side, this is negative. So electric will get set up in this direction from positive to negative. इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, electrons will experience force in opposite direction because of the negative charge. Okay, electrons will experience force in that direction. सिंपल सी बात है. तो अभी देखो, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव करना है. सो हियर E is equal to electric field, let's say L is length of conductor, V is potential difference, okay. So सबसे पहले फोर्स acting on electron, so F is equal to QE. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? -E. So see, this shows, negative sign shows that force experiencing on electron and electric field, they both are in opposite direction. Okay, so Q is equal to -E. Now force लग रहा है तो एक्सेलरेट होगा पार्टिकल. यहाँ पे acceleration that we have to find. So see, by Newton's second law, we have seen that F is equal to mass into acceleration. Actually acceleration क्या होता है? F by m. तो force हमने यहाँ पे निकाला है. Okay, so therefore acceleration will be -E to electric field by m. That's why this is equation 1, this is equation 2. Acceleration मिल गया यहाँ पे हमें. Okay, now see, by equation of motion, so V is equal to U plus AT. ये इक्वेशन है सिंपल, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा इलेक्ट्रॉन्स का जब बैटरी अप्लाई नहीं किए तब. एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर अस. ओके, तो A, that is -E by m. तो यहाँ पे जो टाइम होगा it will be tau, that is relaxation time. Okay, that is relaxation time. So what will be the equation of Vd? That is -E m into tau. Clear है? Simple. So this is the equation of drift velocity. This negative sign shows that electric field and drift velocity are in opposite direction. Okay, but see, as you can see के magnitude consider करो अगर in terms of magnitude, so Vd will be equal to E by m into tau. So in terms of magnitude, you don't need to consider the negative sign. You can also have one relation between
drift velocity and potential, that is voltage. ओके, तो यहाँ पे रिलेशन तो है, E इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज V बाई L. सो VD दैट इज इक्वल टू E टाउ बाई M इंटू V बाई L. E के जगह पे V बाई L रख दो, दैट E इज इक्वल टू V बाई L होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट. यू कैन ऑल्सो हैव दैट रिलेशन. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कॉपी में लिखना अच्छे से. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये. ले लिया स्क्रीनशॉट, कॉपी में नोट्स बनाना है अच्छे से. ओके, सो आई होप कि ये डेरिवेशन क्लियर है. नेक्स्ट डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो. ऑल द बेस्ट.